Shivani, were you in the last class? शिवानी लास्ट क्लास में थे आप? शिवानी यस मैम। लास्ट क्लास में थे आप? नो मैम, सर ने मैम इससे पहले जो क्लास हुई नहीं थी मैम। लास्ट क्लास मतलब आई मीन टू से HIF की लास्ट क्लास। ओह यस नो मैम, मैम उस दिन मैं वैक्सीनेशन के लिए गई थी आप मैम। अच्छा ओके, यस 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 आई रिमेम्बर। ठीक है, तो डिड यू गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, क्लास रिकॉर्डिंग देखा? नो मैम, नहीं वाई? देखा। वाई सो? मैम मैम एक्चुअली मैम फिर उसकी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर मैम वर्क इतना था मैम पेंडिंग, मैम वो करने लगी, इस वजह से नहीं तो देखा। हम लोग लास्ट क्लास में एक्चुअली रोमन ऑर्डर्स पढ़ रहे थे। There are 5 type of Roman orders. One is Ionic, like starting with the Doric, Ionic, Corinthian, Composite, and Tuscan. एक बार वीडियो देखना, you will get to know everything. And please ask others to join as soon as possible. We are not studying anything new, but I want to know how much of your assignment you have done. ओके मैम। अभी उसके पहले कितना असाइनमेंट कर लिया है तुमने शिवानी? मैम आपने मैम आयनिक और एक मैंने नोट्स लिखवाए थे, वो सारा लिख रहे हो ना साथ में? मैम यस मैम, बट मैम क्लासेस जो मैम बीच में मैम थोड़ी छूट गई मैम, वो नहीं है बट मैम थोड़ा बहुत जो मैं अच्छा अटेंड ओके। की हूँ। कहाँ तक है, क्या है टॉपिक्स बताओ। अपना नोटबुक खोलो, टॉपिक्स बताओ बेटा, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं तुम्हारे पास। यस मैम। टेक योर टाइम। मैम आपने जो मैम इससे पहले वाला मैम जो लेसन मैम आपने दिया था मैम वहां तक के मेरे हैं, बट मैम टॉपिक बेटा, टॉपिक बताओ। ऑर्डर्स के पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था? मैम स्तूपा अग्रोहा ये सब मैम यहाँ तक ही है मैम। ग्रीक बेटा ये और ग्रीक लास्ट सेमेस्टर आर्किटेक्चर। का है। यस मैम, ग्रीक आर्किटेक्चर मैम, इंटीरियर मैम यहाँ तक ही मेरा है, अच्छा आगे वाला नहीं है मैम। अच्छा ओके, ठीक है। अच्छा, आस्क अदर्स टू ज्वाइन। इसके आगे के नोट्स गो टू द वीडियो, और उसके आगे के नोट्स भी लिख लो, ठीक है? डोंट मिस ओके एनीथिंग। ओके मैम। बाकी सबको बोलो जल्दी से ज्वाइन करें, इट्स गेटिंग टू लेट नाउ। यस मैम। ओके।
गुड आफ्टरनून श्रुति। श्रुति लास्ट क्लास अटेंड की थी Good तुमने? afternoon, ma'am. Ma'am, I guess not. अच्छा ओके। हैव यू गॉन थ्रू द वीडियो, No, मतलब द ma'am. क्लास रिकॉर्डिंग और एनीथिंग? No, नो। ma'am. तो उसको एक बार देख लो, इट्स इम्पोर्टेंट। और उसके नोट्स फिर अपने अकॉर्डिंग बना लेना, और यू वांट मी टू डिक्टेट इट अगेन। एक बार एटलीस्ट सब लोग वीडियो देख लो। नेक्स्ट क्लास इज टुमारो। अगर नहीं समझ में आता है तो आई विल डिक्टेट यू गाइस, मतलब ऐसे पॉइंट्स में आई विल डिक्टेट यू देन। Okay, ma'am. ओके, बाकी असाइनमेंट कहाँ तक किया है, मतलब जो नोट्स हैं वो कहाँ तक कंप्लीट है फिर? Ma'am, I've just started it and I was actually watching the videos क्योंकि पहले classes attend नहीं की थी तो अभी धीरे धीरे कर रही हूँ. अच्छा ओके, यस यू हैव वंस। Yeah. ठीक है, ओके, कंप्लीट योर असाइनमेंट देन फर्स्ट। टेक योर टाइम टुडे। आज असाइनमेंट कंप्लीट कर लो। जिस जिस टॉपिक के नोट्स नहीं है या नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डिंग में, देन श्रुति लेट मी नो, देन आई विल प्रोवाइड द नोट्स अगेन। या अगर जैसे कोई प्रेजेंटेशन होगी तो आई विल प्रोवाइड यू विद द प्रेजेंटेशंस इवन, या पीडीएफ होगी तो। ठीक है, Okay, ma'am. ओके ओके फाइन, यू कैन गो थ्रू द वीडियो वंस। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ।
Shruti, are you there? Yes, ma'am. Okay, I'm presenting my screen. We have some like brief notes about this Roman orders. Just read that out once for me. Just a minute. Okay, can you see it? Yes, ma'am. Okay, start reading it. Order, also called order of architecture, any of several styles of classical or neoclassical architecture that are defined by the particular type of column and entablature they use as a basic unit. A column consists of a shaft together with its base and its capital. The column supports a section of an entablature which constitutes the upper horizontal part of a classical building and is itself composed of an architrave and cornice. The form of the capital is the most distinguishing characteristic of a particular order. There are five major orders: Doric, Ionic, Corinthian, Tuscan, and Composite. Yeah, continue. There are many separate elements that make up a complete column and entablature. At the bottom of the column is the stylobate. This is a continuous flat pavement on which a row of columns is supported. Rising out of the Out of the stylobate. stylobate is the plinth, a square or circular block that is the lowest part of the base. Atop the plinth and forming the remainder of the base are one or more circular moldings that have varying profiles. These may include a torus, that is a convex molding that is semicircular in profile, a scotia with a concave profile, and one or more fillets or narrow bands. These are some orders जिसमें डिटेल given है. So this part is the capital. This is the entablature which has your metope and triglyphs. Okay, so start reading it from here. The shaft. The shaft which rests upon the base is a long, narrow vertical cylinder that in some orders is articulated with fluting. The shaft may also taper inwards slightly so that it is wider at the bottom than at the top. Atop the shaft is the capital, which serves to concentrate the weight of the entablature on the shaft and also acts as an aesthetic transition between those two elements. In its simplest forms, the Doric, the capital consists of three parts: the necking, which is a continuation of the shaft but which is set off from it visually by one or more narrow grooves; the echinus, a circular block that budges outward at its uppermost portion in order to better support the abacus, and the abacus itself, a square block that directly supports the entablature above and transmits its weight to the rest of the column below. Yes. Then the entablature is composed of. Um, Changya, ah, get a oh. The entablature is composed of three horizontal sections that are visually separated from each other by moldings and bands.
The three parts of the entablature in ascending order are called the architrave, frieze, and cornice. The unit used in the measurement of columns is the diameter of the shaft at the base. Thus, a column may be described as being 8 diameters high. Ancient Greek architecture developed two distinct orders, the Doric and the Ionic, together with a third, Ionic. Ionic, together with a third capital, which with modifications were adopted by the Romans in the 1st century BC and have been used ever since in Western architecture. The Doric order is characterized by a slightly tapered column that is the most squat of air क्या लिखा है वहाँ पे? All the three orders. all Sorry, the all three the orders orders. all the orders Yes. measuring in height, including the capital, only about 4 to 8 lower diameters. The Greek forms of the Doric order have no individual base and instead rest directly on the stylobate, although subsequent forms of Doric frequently were given a conventional plinth and torus base. The Doric shaft is channeled with 20 shallow flutes. The capital, as stated before, consists of a simple necking, a spreading, convex echinus, and a square abacus. The frieze section of the Doric entablature is distinctive. It is composed of projecting triglyphs units, each consisting of three vertical bands separated by grooves that alternate with receding square panels called metopes that may be either plain or carved with sculptured reliefs. The Roman forms of the Doric order have smaller proportions and appear lighter and more graceful than their Greek counterparts. Okay, so this is the general brief about the orders. You have studied this Doric order and Ionic order in your Greek part. Now these are from the Roman architecture. So they are just lighter, and you have this in your previous previous class recording as well. So I think you can read go through that once again. तो एक सेम जैसा ही रहेगा तो it would be better I guess. Okay. Okay, ma'am. Ma'am, I was going through it. Okay, then continue that. Okay.